gentlemen, here we are for another session of therapy session. That's right. So far, we heard many great people come along. Just people who we got to know through our platform, and it's fun, right? Like to hear such opinions on maybe even polarizing topics for that matter. But again, like I always say, you are here to talk about anything and everything, and your opinion on anything and everything. Because hey, you're entitled to. So if you want to come on the show, talk about something, please, you're most welcome. Be our guest. But today, let's start off with two guests we have from the world down under. Yes, I'm talking about Australia, and no, I'm not talking about the Tasmanian devil. I'm talking about two guests we have, Ruchit Patel and Tirtha. Guys, how are you doing? जलसा बहुत हंसी आ रही है तेरे को ज्यादा आने वाली है इस एपिसोड में. Well, again, the mandatory JD and Pratyush, thanks again for joining us as usual. And yes, here's a cup for all of us. And it's pretty early in the morning for people like me. So here's a good luck, or rather, good morning for me. Here you go. Hi. आफ्टरनून. यो So, guys, Ruchit ऐसा and आवाज करना जरूरी है. yeah, ऐसा आवाज करना जरूरी है. आवाज में अरे मैं आवाज वीडियोस वो ना देखते नहीं है आवाज ज्यादा. editing में आता है. तो ऐसा ओके तो जेडी संभाल ही ले. Oh, Ruchit and Tirthak, how's it going on there? So for us in India, we are still under kind of lockdown. How's the lockdown going there? How's the pandemic been there? How are you handling the lockdown? And how's it been for you over there, Ruchit? Either see in where I live, it's South Australia is quite far from New South Wales, and it's not that much populated. It's not that much big tourist destination as well. So यहाँ पे lockdown जैसा कुछ हुआ ही नहीं था in the first place. और लॉकडाउन तो हुआ ही नहीं था और केसेस भी ज्यादा है नहीं. लास्ट अभी तो 0-0 बहुत टाइम से चल रहा है और लास्ट 1 मंथ से हार्डली 1-2 केस हुए यहाँ पे कोरोना के. तो कंप्लीट लाइक लॉकडाउन मतलब ऐसे 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 बोलें कि व्हाट दे डिड हियर जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ इन जनवरी एंड दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग, तब से इन लोगों ने स्टेट बॉर्डर्स क्लोज कर दी थी. सो देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, देयर वाज नो पब्लिक मूवमेंट बिटवीन द बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद हो गई. सो देयर आर ओनली 2 मोड ऑफ मतलब यहाँ पे अगर आना कम्युनिकेशन तो देयर आर ओनली 2 मोड. तो वही था, तो वो बंद कर दिया. सो देयर वाज नो वन गोइंग आउट ऑफ द स्टेट, देयर वाज नो वन कमिंग इन. तो बेसिकली पॉपुलेशन कम है तो कुछ ज्यादा कोरोना हुआ ही नहीं आता. So basically, from what I understand, Australia is not. I've read reports and seen where Australia has not been that affected, but hearing from people who have been there, like you guys seem like handling like it's not a pandemic at all. Here we are really scared. Because people are more skeptical. What I think is people are more skeptical and more panicked about this pandemic. Like Ruchit knows how it started with the panic buying and everything. There were no toilet rolls for 3 to 4 months. पानी इस्तेमाल करना पड़ा. ना we had in इस्तेमाल करके पता चला अपना तीखा खा के ठंडा कर सकते हैं. we had in stocks. हम रखते हैं स्टॉक. आपने तो इतना केवल मतलब लोग लड़ रहे हैं शॉपिंग मॉल में, लोग लड़ रहे हैं कि नहीं मैं ये लूंगा, नहीं मैं लूंगा. और लिटरली में जो फॉर ओल्ड पीपल दे हैव टू अलॉट अ टाइम शॉपिंग सेंटर में फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 10 is allotted to old people. Only old people above 65 senior citizens can shop. That's it. No young people can shop. And physically handicapped or physically not able to shop वैसे लोग. तो तुमको क्या लगता है वो rules if we apply it here in India will it work? It's not practical. It can be applied only in a country where population is less. It's simple as that. It can't be practical in India. नहीं हो सकता वहाँ पे इंडिया में क्योंकि we have too much population और डाइवर्सिटी इतनी है कि यू कांट कंट्रोल. एवरीवन हैज डिफरेंट थिंकिंग, एवरी स्टेट हैज डिफरेंट थिंकिंग. हियर इज सेम एवरीवेयर. ऐसे यहाँ पे क्या है, इफ लाइक
what difference I saw कि इंडिया में अगर तुम हर एक स्टेट में अलग अलग ऐसे तुमको अलग अलग डाइवर्सिटीज दिखते, इधर ऐसा नहीं है. इधर everything is same, roads are same, every people is same, everything is same here. It doesn't. So if there is one law, if there is one thing that is going on right now, like if there is any statement from any prime minister, like here, if he says that you don't have to do this, then they won't do this. They won't do. ऐसा नहीं कि इंडिया में फॉलो नहीं करते, इंडिया में फॉलो करते हैं सब लोग. आई एम नॉट कंपेयरिंग ऐसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो रहता है, थोड़ा लॉजिकल है कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो यू कांट जस्ट implement these rules there. And one thing you guys know that smaller the population, it's easy to manage It's easy. in terms of everything. Yes. So No, that's અને એક વસ્તુ ઇન્ડિયામાં સારી છે, અહીંયા લોકો પાણી યુઝ કરે તો આવી બધી માથા ટોયલેટ પેપર ભેગા કરીને રાખો. અબે એ તો મેં આપણે રાત્રે બી સવારે વાત કરી ને, રાત તો કહેવાય નહીં, 5 વાગે ફોન કરે તો ત્યારે એ જ કે અહીંયા લોજિક જ ખબર નહીં પડી મને હજી સુધી, કે જ્યારે પેન્ડેમિક સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે એ લોકોએ આ કર્યું હતું કે ભાઈ વી વિલ બાય ધીસ, कि ये रहेगा नहीं, इट विल स्प्रेड कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग. तो तब भी लॉजिक पता नहीं चला था, अब भी लॉजिक पता नहीं चल रहा कि देयर इज रिलेटेड टू टॉयलेट पेपर. અરે અહીંયા લોકડાઉન થાય લોકો ખાવાનું વિચારે, ત્યાં લોકો જવાનું વિચારે. વાહ, डेवलप कंट्री की डेवलप प्रॉब्लम. और मैंने कहा लाइक प्रत्युष, आई सेड लाइक अगर हम कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई ग्रोसरी करने जाते हैं, और अगर गलती से लाइक इट इज अ फ्लू सीजन हियर, सो अगर गलती से तुम स्नीज भी खांसी आएगी और खांसी आएगी तो लोग तुम्हें ऐसा लुक देंगे प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अस प्लीज. ये मीम बनाना इसका ब्रेक वाला नहीं है, ऐसे वाला, वो वाला बोलू होगा. अब ऐसा है. इन शॉर्ट लोगों की फट गई थी, मतलब बहुत फट गई थी. और नहीं, ये तो इंडिया में भी होगा ना कि ऐसे कोई पब्लिक प्लेस पे ऐसे खांसी वांसी खा ले तो सब ऐसे उसको देखेंगे कि उसने ऐसे. हाँ होता है ना, यहाँ पे सब लोग एक साथ मिलके चलते, सब लोग एक साथ खांसते हैं, यहाँ पे ऐसे यूनिटी बहुत है. कभी भी कहीं भी किसी को भी ऐसा, मतलब चलते चलते कोरोना मास्क को. तुम लोग भी बुरा नहीं है. You guys lived here for 22 years. तुम लोगों को पता है, like you said, practically apply नहीं हो सकते वो rules. The reason why I asked is because either cases they're still increasing. And just speaking about my hometown Chennai, we are again under a lockdown 1.0 जैसा. फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है आउट ऑन द स्ट्रीट्स आउटसाइड. पर यस, सो मैं इसमें यही स्टेटमेंट बोल सकता है कि ह्यूमन माइंड इज नॉट मेड टू सिट एट अ प्लेस फॉर 3 or 4 months. दैट सिंपल इज दैट. एग्री. अभी 3 महीने तुम किसी को एक जगह पे बंद रख के बैठाओगे तो ऑब्वियसली यू जस्ट वांट टू गो आउट एंड साइकोलॉजिकली फ्रेश एयर, और उसको जॉब पे जाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है. एक ही जन को तू 3 महीने से, ये प्रत्युष को तू रूममेट में देख रहा था, रूममेट था ना ये तेरा 2 साल, तो कैसा लगता है तेरे को? तो ये ऐसा है. अभी एक ही 2 जन को, अभी भले अपने पेरेंट्स है, आई कैन अंडरस्टैंड दे आर आवर पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स है, बट यू नीड चेंज. 4 महीने थोड़ी एक ही जन से बातें करते रहोगे. See, I'm not saying no. Like, I totally agree with your point on that. But here you're talking about, it's not just safety of your own. You're talking about safety of other people as well. मान के चल तू infect हो गया, you'll infect your whole family is because you obviously going to come back there. But I'm not saying कि ऐसे ही चलना है, we have to go somewhere or the other. But it's nice to see a country where granted population is very less compared to the area you have. It's nice to see that cases are very low. It's like ठीक है, we can overcome this. Kind of like an optimistic view to look at that. इसलिए that's why I was asking, because Tirthak was here in Feb, right? You're in here in India. बच गया वो टाइम पे, वापस आ गया इधर. बच गया. Come here on 5th of March. Otherwise, I would be having there only. Exactly. So I met Tirthak. He was here in Feb, so it was fun watching him. But then उसी time it was all starting to come out क्योंकि उससे पहले it was just in China and then slowly it's trying to spread. The first thing I was like, by March I was like, did Tirthak go back? That's the first thing I asked Harsh.
Hey, but और in starting, initially, India has done very well in controlling the pandemic. Like, look at the numbers. Like, death toll versus the infections rate is high, but if still the death toll compared to US, which is already a developed country, hmm, so it makes they, sense. And there are Mhm. countries in Europe also. They have less population, but they are hugely affected by this pandemic because they are major tourist destination. That's it. Doesn't matter you have less population or more population. Or the main thing Australia is benefited is because it doesn't have geographical borders. Like there is no physical border with any country. There is only two ways of coming here, either by plane or other by boat. So अगर दो mode of transport you can control, then you can control whole pandemic. That's the way. अभी जो country border share कर रही है दूसरी country से, there would be of course people coming from there legally, illegally anyway. So that's how it works. That and यूरोप में even ऐसा ही है. for a fun fact, if I need I am living in New South Wales, so if I want to go to Ruchit place, I'm not allowed to go. By the way, Nice. his border is closed. ચાલશે. આવે જ છે આવે જ છે હમણાં આવવાનો જ છે. So we are expecting on 20 July, Southern Australia will open the borders. But here the states are reluctant, like the states like Queensland, Southern Australia, Western Australia, are reluctant to open the borders to anyone. So nowadays, if I'm living in New South Wales, it's easy to travel to Auckland, New Zealand, rather than going to Southern Australia. बॉर्डर्स खोलना भी इट्स अ बिग रिस्क. अभी जैसे न्यूजीलैंड ऐसे बहुत शो ऑफ करने में कि वी हैव कंट्रोल द पेंडेमिक, वी हैव 0 केसेस, हम बॉर्डर ओपन करेंगे, जैसे खुला 2 केसेस स्टार्ट हो गए. सो डजंट मेक सेंस ऑफ डूइंग शो ऑफ राइट नाउ. सो अभी ऐसा है क्रिटिकल सिचुएशन. well, अभी तो भाई वायरस को म्यूटेट होना बाकी है. ना Like to add, जैसे रेड्डी, यहाँ पे लोग जो like people are not from science background, they usually say, अरे यार कितना इजी चीज है यार, वैक्सीन निकालो हो जाएगा सब. ये वैक्सीन निकालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे रोटी सब्जी बनानी है ना, ऐसे आटा लाओ पानी डालो हो जाएगा. अरे तू भाई तू मानेगा नहीं, मेरे को लोग कह रहे तूने एमएससी क्यों छोड़ा, तू वैक्सीन निकाल लेता. मैंने बोला एक सेकंड, बहुत जोर से एक अच्छा सेकंड. है, अच्छा है, छोड़ भाई, दिया. मैंने प्रत्युष MSc वैक्सीन छोड़ा है, निकालेगा, मैं bro. नहीं लूंगा. ब्रो मैंने एमएससी, देख पीएचडी वाले मर रहे हैं, ठीक है भाई, पोस्ट ये लोग साइंस रिसर्चर मर रहे, मैं एमएससी के बाद निकालेगा. मैं भाई तू पढ़ता भी नहीं निकालेगा था, भाई तू. मैं जो पढ़ता भी नहीं था, मैं कॉलेज ऐसा मार अटेंडेंस के लिए गया हूँ. मैं निकालेगा वैक्सीन बिना आइडिया के. मतलब I guess more than the viewers, the irony will be felt by Ruchit, Tirthak and Jaydeep कि लोग प्रति से पूछते हैं वैक्सीन निकाल. नहीं, मुझे कौन लोग है वो लोग कौन है भाई? हम नहीं है ये फील्ड. हम कभी पूछे ऐसा? हम सब कभी पूछे? हम है ना, कैसा है पता है, इसमें सिर्फ तू ही है जो है ना प्रॉपर ऐसे पढ़ने जैसा है कि जो आगे जाके पीएचडी का सोचेगा और वो सब. हम 4 नहीं है, हमारा काम डिग्री. देख भाई, मैं तेरे को पहाड़ से उल्टा लटक रहा मिलूंगा, ये यहाँ पे ये दोनों बिजनेस करते हुए मिलेंगे. जयदीप अपना फोटोग्राफी कर रहा होगा. बिजनेस ब्रैकेट u.s.a. ब्रैकेट क्लोज. और ऐसे ये अपने ये वीडियो स्टीरियोटाइप्स पे है ना, तो स्टीरियोटाइप्स वही है कि पटेल और ये यूएसए, पटेल और यूएसए, पटेल और यूएसए तो आगे आएगा, वो बाद में बात करें. पर ये तीर्थक वही है ना, शाह वाणिया, तो हम बिजनेस के आने जाते हैं. वो स्टीरियोटाइप्स. So we talked about the pandemic, and yes, I genuinely wanted to know क्योंकि it's a thing which I hearing is or seeing is one thing, and then hearing it from people who are living there is another thing. It's like it's validated, but then they guys would know it obviously better than any of us can. We can talk about India though, and I don't want to talk about it because we all know it sucks. So moving on, let's focus on these two because these two are Indians living in Australia, a fable country where land of the opportunities, kind of like America, but way out in the east. So why don't you guys tell us how it actually is?
First of all, thanks for portraying the abroad as the heaven on the earth. I appreciate that. But એક મિનિટ આમાં હું એડ કરી શકું એક વસ્તુ हाँ तो रेड्डी you must be knowing about राकेश शर्मा जो पहला इंडियन था जो गया था स्पेस में. So when Indira Gandhi then prime minister asked him कि how does India look from the space, then he said that ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान. तो वो हम स्पेस ऐसा समझ हम text कर रहे हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. सही है. Yeah, जब like, we have to drink to that. We are all Indians after all. Come on. हाँ of course. अभी हमारा हम सिर्फ फेक है ना राइस पे भी कुछ भी हो जाए सिर्फ पासपोर्ट चेंज होता है इंडियन ही रहते हैं सब. Yeah, we brown skinned people, man. We can be seen just as Indian. Even the white people, Stereotype. like Jagdish and Jaydeep, even you guys are brown skinned, right? नहीं होता है, जैसे हम जब Brown and स्टार्ट proud. आते थे, अभी कभी भी कुछ शॉपिंग करने चले गए तो हमारे दिमाग में ना एक नेचुरल कैलकुलेटर होता है. अरे कोई ये $2 की चीज लेने का, अरे 100 रुपए में, अरे ऐसे कौन लेता है यार. और कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप को. तो ऐसा मल्टीप्लाई होता है ऐसा. नहीं इनिशियली और ये सब जो भी तेरे को अभी बुला रहे हैं. तेरे को बुला रहे तेरे दोस्त ही है. नहीं रे मेरे होते तो फिर ऐसा पता चल जाता. मेरे को ऐसा वाइब्स आती है. अभी मेरे को बोला रुचित मेरे दोस्त है. मेरे अच्छा बोल रहा है मेरे. हाय. मैं ये स्टीरियोटाइप में ये बोलना चाह रहा था कि हाँ जो लोग दोज वर माय क्लासमेट्स एंड फ्रॉम सीनियर बैच अभी जो बाहर है फॉरेन कंट्रीज में दे कैन रिलेट टू दिस कि जब पहली बार हम यहाँ पे आते लाइक इनिशियल फर्स्ट 2 weeks या 3 weeks या मंथ में whenever you go for shopping or whenever you see any price tag anywhere you just convert it to the rupees and compare it to the situation in India or compare it to because अभी यहाँ पे फ्राइज लेने जाओ तो $2 की आती है फ्राइज राइट. तो अभी $2 है 100 रुपए की फ्राइज में 100 रुपए में तो आपको जम्मानु થઈ જાય इंडिया में. अभी फिर बैंक अकाउंट बहुत हो अंदर भरा हुआ तो फिर ये सब नहीं सोचते. जैसे अभी मुकेश भाई क्या है हेलीकॉप्टर तो उनको सोचना नहीं पड़ता ज्यादा. वो सोने की प्राइस खाते हैं भाई. चलता है उसको. I mean, more than the prices, I'm more curious about just your experiences there, living there because Tirthak, you've been there for 2 years, Ruchit for a year. How has it been like, being as Indians in another country? Yes, I get the point of it is our home, obviously, always will be. But how do you say your experiences were? So people have this fake impression Monday to Friday काम करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे और सैटरडे संडे पब्स में जाते हैं, बियर पीते हैं, फ्रेंड्स के साथ मटर गश्ती करते हैं. ये लाइफ होती है वेस्टर्न कल्चर की, which is again I say it's illusion है but it is true for some extent. I have seen many people like we are all from middle class right and we are from Gujarat so हमको इतना वो अल्कोहल और वो सब इतना एक्साइटमेंट ज्यादा देता है. पर for many people coming from Mumbai, Delhi, big cities, so there is nothing different. My friends, my classmates are from Mumbai, so they go back to India in the vacation because they feel like this place is pretty boring to them because they have lived in Mumbai ऐसा. Yeah, so wait a minute. यहाँ पे नाइट लाइफ एंड क्लबिंग वबिंग तो बहुत कॉमन चीज है. इधर भी वही चीज है तो उनको कुछ नया नहीं लगता ऐसा. हमारे लिए वो सब नई चीज है फॉर गुजराती. बाकी तो कॉमन ही है तो इतना है नहीं. There are people जो जैसे jobs करते we are allowed to work 20 hours right, so there are people who work for 20 hours. There are people who do 2 jobs like illegally and shit. So there are people who do jobs, they enjoy their life as well. When you say illegally, do you mean like illegal or like illegal नहीं, उसमें कम पैसे मिलते हैं and everyone knows, even the Australian tax authorities also knows about this. Even government knows कि students do this second job और उनको क्या, उनका तो economic development ही हो रहा है.
तो इन लीगल और इलीगल में डिफरेंस क्या है वो मैं समझाता हूँ. सो हमारे इंडिया में जैसे हमारे पास पैन कार्ड और वो होता है जिससे हम वो टैक्स और वो सब भरते हैं, राइट. तो यहाँ पे एक TFN करके एक होता है, टैक्स फाइलिंग नंबर. तो उससे हम टैक्स फाइल होता है हमारा ईयरली यहाँ पे. तो सो when you come here, तो the university first suggests you to get an TFN number so that you can get a proper job of 20 hours. So on that TFN number, the ATO is Australian Tax Authority organization. Authority nahi, organization. So they monitor our income based on our TFN number. So if we are working, we can work more than 20 hours on the TFN number, but if you get caught, you can be sent back to your country where you have come from. And there are many cases in which people are being sent back because not all here come with an intention to study. Many people here come as an intention to work, but they can't get a work visa, so they come as a student visa and then they do work here. They get into any small university and then they do work for like n number of hours, as much they want. So there are people who do like that. There was one case in which a guy was working 72 hours a week on TFN. He was sent back to India. That's how it works. So if you so people here, what they do is they take care about the 20 hours on TFN, and then they work other hours if they want on cash. Like the owner of that particular, the employer will give you cash, and the cash would be the less amount than the TFN, the job that you get on TFN. तो yes, तो टैक्स उसमें टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं कि टैक्स कट के आता है और पैसे भी कम मिलते हैं, एंड वो ज्यादा कम होता है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बहुत कम होते हैं पैसे वो. सो पीपल प्रीफर टू गो ऑन जॉब ऑन TFN. No, the reason why I asked, is it illegal? I thought you're talking about selling drugs and stuff like that. So, Nah. That's the last thing you want to do in a foreign country. And it also depends on perspective. Like अगर हम जाते हमें मतलब ऐसा होता, we are Indian, so हमें ऐसा होता है कि let's get money and let's study to like काम भी करो, work hard and enjoy. हाँ. और दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि when you come out of your comfort zone, अगर वहाँ पे इंडिया में क्या है, you have a social security or social circle, so whatever actions you do, like you don't take the responsibility. कभी कभी ऊपर नीचे हो गया तो पेरेंट्स संभाल लेते हैं. पर जब तुम कोई नई कंट्री में एक टोटली प्लेस पे अगर आप आते हो तो you have a lot of responsibilities. जैसे आप आपका असाइनमेंट्स भी आपको खुद करना है, आपको डेडलाइंस भी मीट आपको करना है. यू हैव टू अर्न, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, मैनेज एवरी फंड्स, यू हैव टू फाइल योर टैक्स बाय योर ओन, यू हैव टू पे द इंश्योरेंसेस. सो एक तरीके से एंड एट द सेम टाइम यू मीट good or bad people in your life and you learn so many lessons, experience. तो ऐसे हम mature होते हैं in that terms, like how to deal with life and how to deal with people in a different ways. So I'm glad you brought up this point of good or bad people. How many people, good or bad, have you guys met? You know what I mean. So most of the time, I'm not circling Indians, but most of the time people from Asia, so they know the situation of a student. So like he exploit will that situation. Okay, and you are the one who wants the job. Okay, so he will exploit you. He will exploit you. ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे. So our exploitation in the terms of ऐसा exploitation के officially you are supposed to get at least $18 illegally. Okay, he will offer you $12. He will offer you $13, and that too if you do overtime you are not get paid. Yeah, this is because this is the thing. Sorry, this is the thing that I told about TFN or cash jobs. This is the thing that they know कि उनको पैसे की जरूरत है. They have to pay their fees and everything because they are having debt and everything in India. Now they have to work hard for that, right? So 20 hours में उतने you can't make. Like you can make maximum $600-700, I guess.
तो उसमें भी टैक्स कट के आता है, सो यू गेट हार्डली $350-400. तो अभी $400 में रेंट आएगा, यू हैव टू पे योर बिल्स, इंश्योरेंस, फिर इफ यू ओन अ कार यू हैव टू पे फॉर इंश्योरेंस फॉर दैट कार, बहुत सारे बिल्स है, वो अपने बाद में बात करते हैं कितने होते हैं। तो यार बहुत सारे बिल्स होते हैं, तो दे नो दिस थिंग, सो दे एक्सप्लॉइट दैट थिंग, दे नो, and you can't do anything about that. If you go to any like ETO and complain about them, so that would be bad for you as well, because you won't be getting a job then. And technically you are not in the records. For example, if I am working there, You can't, yeah. I'm nowhere. So on what basis you are going to file the complaint? You don't have any basis, so you are stuck there. You can't legally proceed with anything because you don't have any legal proofs, like any contract sign. There are no signing of contracts, or there are no signing of anything. It's not you. They don't even. You can say your name, anything. You can. They don't. They won't even care to ask about any ID or anything. Like they won't even care. They won't ask about any ID. They would just say, if you can work, just come at this time and start doing your work. That's it. And sometimes they are not even paid. I have many friends who have been working for many months, and they are not being paid for that. And they can't do anything. They can't do anything, Reddy. They can't even go to police. They can just complain about it on social media and shit like that. They can't do anything. It won't affect the owner. That's how it is. Other side of abroad. Other side of abroad. Stereotypes. ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे जलसे कर रहे हैं, जलसा नहीं बका गया, इतना भी जलसा छे, इतना भी नहीं. So you have to be clever. You have to be, you should, if you know things like how it works in the real world, कि how can someone manipulate you, how can they find a way to make you work or anything, then they would do. And you will face, if anyone can relate, many people who have gone abroad, who have stayed abroad, doesn't matter they are rich or poor or middle class, they would relate to this. They must have been exploited once by any local guy there. It doesn't matter, it would be an local like of that country, or it would be an origin from their own country. So yeah, that's how it is, reality. अरे एक मिनट હું બારી બંધ કરતા, કૂતરા હેરાન કરે છે. क्या क्वेश्चन गया तेल लेने. अभी एक और स्टीरियोटाइप ऐसा है कि जो भी ये वीडियो पे आता है उन सबको ऐसा होगा कि वो वीडियो सब देखता होगा और वो सब होता है. मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ लास्ट वाला वीडियो देखा. ऑनेस्ट कोई बात नहीं, मेनन का वीडियो देखा ना, बहुत अच्छा, बढ़िया. हाँ, मेनन का थोड़ा देखा. एक और स्टीरियोटाइप, ये फनी स्टीरियोटाइप, बस सबको अभी बस सुबह ही बात हुई थी मेरी रेड इस प्रत्युष और जेडी से, कि सबको ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन यहाँ पे काम करते रहते, वी आर बिजी ऑल द टाइम. और तीर्थक ध्यान दियो जरा, फॉरेन तीर्थक इसका रोस्ट किया था, ध्यान देना तू. सबको ऐसा कि पूरा दिन काम करते रहते, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम कॉल करेंगे तो बिजी होंगे. तो ऐसा नहीं है. देख, इसमें ऐसा एक स्टीरियोटाइप है कि हम इंडिया में भी ऐसे ही थे. मैं इंडिया में भी पूरा दिन PS4 खेलता रहता था, ट्विटर पे किसी को ऐसे हैरान करता रहता था. मैं इंडिया में भी किसी का फोन उठाता नहीं था. इधर भी वही है, पर फर्क क्या है कि तुम फॉरेन में आया ना, ऐसे फॉरेन तो सबको ऐसा है कि लाओ उसको हर रोज कॉल करके पूछे कि क्या कर रहा है. इंडिया में कोई कॉल ही नहीं करता तुमको, तो किसी को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं. सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है. ये सिर्फ स्टीरियोटाइप है कि बिजी सिर्फ 20 घंटे ही काम करते हैं भाई, ज्यादा नहीं रह सकते बिजी. क्या लगता है तीर्थक, सही है? हाँ सही तो है, पर यहाँ पे नहीं तो सच निकल जाएगा सबके सामने. सबको सच पता चल जाएगा. मैंने शेल बना के रखा है, बहुत तेज वाला. હવે મારે બધાને ફોન બી ઉપાડવા પડશે હવે આના લીધે. અરે બે એક તો સાચું કહો ને જેડી, મેં છે ને જેટલી આ વર્ષમાં જેટલી વાતો કરી છે ને ફોન ઉપર, એટલી મેં છે ને આગળના 20-22 વર્ષમાં કોઈ જોડે વાત નહીં કરી જેટલી આ એક વર્ષમાં વાત કરી. વર્ષની ક્યાં વાત કરે? People expect to know different things from you, like क्या हो yo
और यहाँ पे तो कोरोना चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है? अरे भाई वहां यहाँ पे पे वो जो चल रहा है वही यहाँ चलेगा पे यहाँ पे। फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है. I always wanted to ask this who's living outside of India. Does anyone call you and scream at you कि how are you? कैसा है? ऐसा कभी किया कोई? Every day there नहीं, is આમ someone. પેલું વિડીયો કોલ કરીને આમ તીર્થ ऐसे नहीं, ऐसे वो क्या है इसमें हेलो हर कोई हर एक रिलेटिव, ऐसे दूर दूर का रिलेटिव जिससे कभी ऐसे सालों से बात नहीं की, अनलेस दे कम ऑन द रिजल्ट ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम्स पूछने के लिए कि वो इधर भी वैसा ही है, बोर्ड एग्जाम जैसे, ये पूछने के लिए कितने कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं. नहीं, the best, according to me, the best thing when you go to India, people ask you, अरे तुम्हें क्या है, तुम तो डॉलर में कमा रहे हो, तुम्हें क्या पैसे की प्रॉब्लम है? अंकल उड़ा भी डॉलर में रहे हैं, आप समझ नहीं रहे बात की गहराई को. सबको ऐसा है कि हम डॉलर में कमाते हैं और रुपीस में उड़ाते हैं. ऐसा नहीं है, हम डॉलर में कमाते हैं, डॉलर में ही उड़ाते हैं. इतना देते हैं गवर्नमेंट को कि उतना ही हो जाता है जितना इंडिया में होता है. तो लोग पर अभी- ऐसा परसेप्शन रखते हैं कि वी आर रिच, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है यार, इट्स ओके. और उनको पूछो कि डॉलर कैसे आते हैं. That's one place where I wanted to go to is like, you know, you guys talked about, he actually gave us a proper reality check कि भाई ऐसा ही होता है, तुम लोग कुछ भी सोच के मत आओ कि हाँ भाई, it's like, you know, heaven dream है, everything can happen outside of India. India is still India, it's your hometown where you have, home country rather, where you have the right to do everything. And I'm glad to see people of India are not different outside. कि उधर भी they, you know, nah, wait. but one thing I wanted to know is, in India, one thing which can constrict people is people know you either, genuinely do know you, and they also know the kind of people you are based on your names. Patels, Golwaras, Valechas, and South में Reddys. ठीक है, South में Reddys होता है. मैं भी पटेल हूँ भाई, वो- तुमको ना पता हो तो मैं पटेल ही हूँ. हाँ, काठियावाड़ी. exactly. Wait, point is, so you are confirmed by something which is not necessarily you. But like that's my point. So going outside, does that give you a sense of freedom? Yeah. Do people even know कि ऐसे सब stereotypes है इधर? No, they don't, because we also don't know about the stereotypes of the local people living here. So they would be also having these stereotypes, like someone is living in the outbacks, like villages and everything. So their thinking would be conservative compared to the people living in the city. So यहाँ पे भी वो है ही जो अपने इंडिया में होता है कि भाई गांव वाला, शहर वाला, ये पटेल गोल वाला, ये राइम हो गया, पटेल गोल वाला. गाँव वाला तो शहर वो वाला. हर जगह होता है. So it's not different. એમને દેખાવ પરથી ખબર પડે આ ગામડાનો છે કે આ શહેરનો છે. આપણે કેમ અહીંયા ખબર પડી જાય, અચ્છા આ કાકા ગામડેથી આયા. ના અહીંયા ના ખબર પડે. ભાષા ઉપરથી but હા એક્સેન્ટ ઉપરથી ખબર પડી જાય તમને. એક્સેન્ટ ઉપરથી ખબર. એમનો है एकदम પેલો આપણે વિડિયો નતો જોયો, the viewers जो भी देख रहे हैं उनको, if you want to see the real Aussie, like what's the proper Aussie, like local कैसे होते हैं, there is one video on YouTube called the Aussiest interview ever. तो वो देखना, so you will figure out कि कैसे होते हैं Aussies. So you will know. So they are so racism is everywhere, right? Racism is everywhere. इधर भी है, उधर इंडिया तो हम लोग बहुत रेसिस्ट है. मैं नहीं, गोवा के नीचे पूरा साउथ इंडिया. यस. हाँ बस. तो इधर भी मद्रासी, hashtag मद्रासी, hashtag मद्रासी. इधर भी रेसिज्म है, पर दे आर वेरी like I don't know it's a word or not, but funnily racist है वो लोग. बहुत funny racist है. They don't mean जैसे racism US में अभी वो जो Black Lives Matters और वो सब हो रहा है, they are so much into racism कि they kill the other people from different skin color. But here they won't kill you, they would just say the same thing in two different ones. So if they want to say a funny cunt or you funny,
what the fuck, ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी गाली भी देना हो, कुछ भी हो, so they would say not in that way, मतलब racist होगा पर not in a way in which they would harm you as a racist, ऐसा. Like a hey curry boy, come here. They have a general perception, like Australians have a general perceptions that Indians are quite thrifty, they are quite intelligent, and yeah, they know how to save money. So they have this good impression on us. They're very wrong, Yeah. मतलब. तो मतलब बहुत And गलत है हमारे बारे में. we brown are Uber guys here. They that's the thing. They think that Stereotypes. every immigrant here has to do Uber, and everyone does actually. It's Some a point of part-time hobby. some Part-time point of hobby. time here. मैं एक साल में ज्यादा ज्ञान नहीं म्यूट कर देगा अपने सेंसर, पर एक साल में समझ गया हूँ इनका थिंकिंग क्या है. So Things are not what always they seem to be. I think that is something which we can take away from all this. Like, yes, going outside is a good opportunity. Maybe sometimes you can get better opportunities outside, but it's not a bed of roses, what I'm trying to say. You have clear examples here who working hard or studying there, but they clearly tell you, there are people who will exploit you in every sense of the way, and that's the same even back home. Only thing different, you'll see a lot more white people there, है ना? So and Yes. it's on you. हम ऐसा नहीं कह रहे कि इधर मत आओ या कोई फॉरेन कंट्री में ना जाओ, ये सब तो ये तो हर जगह है. It's on you. You have to be clever. You have to understand how the life works before you come here. That's it. You should be brave. You should brace yourself for these things. फिर ऐसा माइंडसेट लेके नहीं आने का कि सब लोग हमारी हेल्प करेंगे और कोई हमको खाना बना के देगा और वो सब. That's not going to work here. और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा आपके मीडियम से कि पीपल नीड टू बी गेट आउट फ्रॉम द नट शेल. जैसे नए फील्ड्स एक्सप्लोर करें. फॉर एग्जांपल, इफ आई से there are so many fields related to sustainable development, there are so many fields related to integrated water management. There is another course called agri business, which focus on economy of agriculture from a different places, and public health जो मैंने किया. so ये सारे fields भी हैं. एक conventional इमेज नहीं रखना है माइंड में कि ओके हमारा बैचलर्स इसमें खत्म हुआ, मास्टर इसमें खत्म हुआ, तो यही 3-4 गिनी चुनी लाइन है, उसमें ही जाना है. एंड रिसर्च इज द ओनली थिंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट मी एंड Jaideep, so I think Jaideep discovered in second year himself that I don't want to go in research. I have a passion and I have figured it out. So he was very clear, and after 2 years or 3 years, I also recognize the same thing, that okay, I am not meant for research, or I'm not much interested in research. So एक ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं और जयदीप एक ऐसे बॉयज ग्रुप में से थे कि जैसे आप फॉर एग्जांपल हर्ष, मानव, श्रेयस, निमित, दिस ऑल हैव अ research oriented mind, and they have made themselves like they want to go to research and pursue research very seriously. But मेरे माइंड में उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे रिसर्च में जाना है, और शायद से अगर मैं कर भी लेता रिसर्च, but if to be very honest, अगर if you are thinking about money, that research will fetch you 6 figure of salary, and that's what the reason why doing PhD, then you need to stop there and rethink about it. Yes. આવું ના બોલ, નહીં તો કારાકોટી સર ને તાર મળવા જવાનું ન્યુકાસલ ખબર છે, બાજુમાં જ રહે છે. હવે હાથ લાંબો કરીને કાન નીચે ઘસી નાખશે. Karakoti sir knows very well about me, and he's just saying कि there are many options here. options. Yes. Yeah, जैसे हम दोनों को बिजनेस में ज्यादा है, बिजनेस में तो there are options here, जैसे पब्लिक हेल्थ है, फिर बायोटेक मैनेजमेंट है, बहुत सारे. So if you don't like, आपको पूरा फील्ड चेंज करके MBA नहीं करना हो, like पूरा बिजनेस वाला नहीं करना हो, if you want to stay in field and do business, there are many options. There are many options. Yes.
Yeah, there so basically coming, so ऐसा बोलेंगे लोग कि भाई ऐसा ही था तो फिर इंडिया छोड़ के क्यों गए तुम लोग, कि इंडिया में ही रह लेते, वहां पे एक्सप्लॉइट नहीं होते और ये सब। तो इंडिया में ये सब इंडिया में अभी जैसे एयू है उसमें इलेक्टिव्स और वो सब ऑफर होता है, जनरली वैसा सब जगह नहीं है, और देयर आर नॉट मेनी कोर्सेज लाइक डाइवर्स compared to these universities which are ranked highly like top 150 in the world or वैसा है। So why not come here and experience how it is? Yeah, it's just for the experience. तीर्थक का पता है वो, मुझे अगर इंडिया में जॉब मिले तो I don't mind going back to India. Yes, if you Simple as that. If we get after a good good jobs, opportunity, yes, definitely. we will definitely come back. It's not कि हम इधर आ गए मतलब इंडिया गया तेल लेने, इंडिया जाना ही नहीं, इंडिया में सब गरीब है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ऐसा नहीं है हमारा। नहीं है, तो हम yes. देशद्रोही नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, देश वाले ही है। But one thing I have to say though, I'm like, for all of you out there, I know these two pretty well and I know how fun they are. I personally had so many fun experiences with them, when I first. हॉस्टल में छत Again, समझ आ गया, इनसाइड जोक समझ आया, लाइक that- सब्सक्राइब और शेयर। like, comment, subscribe for an inside joke. But I know how fun, and to see you guys, going out there, and I knew you were mature, but to see it actually, it's like I really hats off to you guys. Like proud of you all, man. Seriously, I would definitely drink to that. अभी खत्म हो गया यार ये। चलेगा भाई चलेगा। तो मैं तो पीऊंगा। So like I said, I ऐसे really, पूछ like I ऐसे said, पूछ really ले glad that you guys have been there and to share so many stuff about what happens actually, which most of us, let's face it, we do not know. So, but it also brings into the question that it's a different place socially, and so it does affect you mentally, which obviously you can't see. And for people who don't know, we mental health awareness is something which we are pretty passionate about, and we did an episode recently, just this Sunday, and please go check it out if you want to. But the point is, people are affected by different factors, and I guess change of location is one of those things. So how did it affect you guys? Let's start with Ruchir. And just keep it brief. क्या हुआ? हाँ so it's not, as you said, because of the location change, but I want to start from the beginning, from India. So there is one thing I really liked about Ahmedabad University is that they provide a psychiatrist or a therapist on the campus, and you can visit it free of cost and whenever you want on your convenience. So that's really good, and which is of course adapted by from the foreign universities, because I haven't seen therapist in any of the colleges or universities in Gujarat. I haven't heard. If there is, I don't mind. So yes, I just can say that yes, I have used that service when I was in my second year. Yeah, I guess second year. Yes, I used it, and Basically, your dark stages. yeah. So